Hello everyone. Welcome to Testbook Regulatory Bodies. My name is Davinder and I'm your finance mentor. I have more than 3 years of experience mentoring RBI Grade B aspirants and other regulatory body aspirants as well. But I've figured out this thing that many of the aspirants waste their 3 to 4 months in figuring out where to study and what to study, and they still end up following the wrong materials. So I've brought this video for all of you, wherein I'm going to tell you some free materials that are going to be very useful for your self-study for RBI Grade B examination. This video have two conditions. The first is that you must be aware of the RBI Grade B syllabus. Otherwise, you will not be able to figure out that what you need to study and what not. The second is a timetable. You must create a timetable that you are going to diligently follow for next 4 to 5 months. Otherwise, this material and that timetable is of no use, right? So let's discuss that one by one. So our first concept, or we can say subject, is ESI, that is economic and social issues. Economic and social issues के दो हम कह सकते हैं bifurcation है. The first is the conceptual understanding and the second is current affairs. करंट अफेयर्स को हम बाद में समझेंगे, पहले हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी बुक्स रेफर कर सकते हैं, वी विल डिस्कस दैट. द फर्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. दिस बुक इज गुड. यू कैन से डिटेल्ड में इन्होंने सारे कंसेप्ट्स कवर किए हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस 11th and 12th की माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय संदीप कर, दैट यू कैन फॉलो, राइट. अगेन दैट इज वेरी यूजफुल फॉर योर बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज इनइक्वालिटी, व्हाट आर सोशल डेवलपमेंट इश्यूज एंड व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, राइट. तो उसके लिए ये सब चीजें हैं. देन वी हैव फाइनेंस. फाइनेंस के भी आगे बहुत सारी बाइफर्केशन है. फर्स्ट इज द आरबीआई से रिलेटेड सारे सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, एवरीथिंग. देन वी हैव सम कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिलेटेड टू फाइनेंस कंसेप्ट्स, से फाइनेंशियल मार्केट आ गया है, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स, राइट. And then we have some reports, speeches, and we have one more thing that is being added in this syllabus is accounting. तो एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती पाठक. दिस इज अ वेरी डिटेल्ड बुक. इसमें काफी कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सो यू मस्ट नो द सिलेबस इन ऑर्डर टू फिल्टर थिंग्स आउट, राइट. तो आप अपने सिलेबस जरूर देखेंगे, रेफर करेंगे वाइल फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर बुक दैट इज भारती पाठक. इसमें सभी चीजें बहुत ही डिटेल्ड में कवर्ड है. अब बात करते हैं आरबीआई की रेगुलेटरी बॉडीज. इसमें रेगुलेटरी बॉडी दैट इज आरबीआई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वेदर इट्स फंक्शन, रोल्स, ड्यूटीज, हिस्ट्री ऑफ द आरबीआई, यू आर गोइंग टू टेक दैट फ्रॉम द आरबीआई वेबसाइट ओनली. आरबीआई वेबसाइट से अच्छी कोई एक सोर्स नहीं है जहां से आप आरबीआई से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, स्पीचेस, these are also going to be helpful in your examination, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. तो ये सब भी यहीं पर रिलीज होते हैं, दैट इज इन द आरबीआई वेबसाइट, राइट. एंड स्पीचेस को आप रेफर कर सकते हैं फॉर गुड एनालिटिक्स रिगार्डिंग व्हाट आरबीआई वांट टू डू इन द इकोनॉमी, राइट. इसके बाद हमारी आ जाती है रिपोर्ट्स भी आपकी यहीं पर ही रिलीज होती हैं, तो यू आर गोइंग टू फॉलो दैट एज वेल. एक और नया चीज ऐड हुई है आपके फाइनेंस के सिलेबस में, दैट इज अकाउंटिंग, जिसमें आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट, P&L, एंड वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड वी हैव फाइनेंशियल रेशियोज. ये चारों चीजें आपकी मिल जाती है इन योर 11th and 12th की अकाउंटिंग बुक सीबीएसई की. यू आर गोइंग टू फॉलो दैट. वहां से आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, क्योंकि क्वेश्चन लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आते. जनरली फाइनेंशियल रेशियो सॉल्व करने के लिए आता है आपको, या फिर उसका फॉर्मूला पूछा जाता है, या फिर उसका कंसेप्ट पूछा जाता है. तो फाइनेंशियल रेशियोज के अच्छे से फॉर्मूला और हम कह सकते हैं कंसेप्ट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस. फॉर द बैलेंस शीट एंड द P&L यू आर गोइंग टू हैव द क्लैरिटी ऑन दैट. क्लैरिटी लेंगे बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स, राइट. सो वी हैव आरबीआई, हमने सारी देख ली कि फंक्शंस एंड हिस्ट्री कहाँ से कवर करनी है, फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं. तो यहाँ पर इस भारतीय पाठक में आपको नबार्ड, IRDA, PFRDA, इससे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन इसी में मिल जाएंगी. तो बाकी अदर रेगुलेटरी बॉडीज के कंसेप्ट के लिए यू डू नॉट हैव टू गो हेयर एंड देयर. तो ये बुक अच्छी है, राइट. लेट्स जस्ट मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट की बुक के लिए आई वुड रेफर दिस टू बुक्स, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर. अगेन ये दोनों में से आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, एंड इसमें पूरा कंप्रिहेंसिवली सब कुछ कवर्ड है इन वेरी इजी लैंग्वेज, जो आपको समझ में भी आ जाएगी, राइट.
सो मैनेजमेंट के लिए यू कैन फॉलो एनी वन ऑफ दीज बुक, दैट इज टी एन छाबड़ा की प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन बीपी सिंह एंड टी एन छाबड़ा की ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। दोनों बुक्स ही अच्छी हैं फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और आपको सारा कुछ सिलेबस भी यहीं से भी मिल जाएगा, पर आपको फिर भी सिलेबस एक बार रेफर करना पड़ेगा टू सी व्हाट यू नीड टू स्टडी एंड व्हाट नॉट, राइट। आगे चलते हैं। अब मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट मैम आरबीआई की वेबसाइट से सर्कुलर पढ़ना और नोटिफिकेशन पढ़ना इट्स वेरी डिफिकल्ट, सो फॉर दैट यू कैन इवन फॉलो द न्यूज़पेपर एज वेल, दैट इज बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, और एक और हम रेफर कर देते हैं यहाँ पर, दैट इज फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ऑल दीज थ्री न्यूज़पेपर्स आर वेरी यूजफुल एंड वेरी हेल्पफुल एज वेल। इनमें से आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा योर आरबीआई नोटिफिकेशन एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज न्यूज भी आपको मिल जाएगी एज कंपेयर टू देयर वी कैन से हार्ड कोर लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस, राइट। वहां से कंपेयर करें तो यहाँ पर इन्होंने कंपेरेटिवली इजी दिया होता है, राइट। Even after that, you are not able to cover these newses on a daily basis because again, figure out करना newspaper में से कि कौन सी news important है, कौन सी नहीं, it is a very difficult task. And if you are trying to refer only from the newspaper, then avoid any political news. कोई भी political news आप नहीं cover करेंगे. Direct finance से related या फिर economic and social issues से related, you are going to cover the news, right? And even if you find it very difficult to read by yourself, then we have these three free resources. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. All these three current affairs are being covered daily by us. That is, first is PIB current affairs by Prakash sir, general current affairs by Pushpak sir, and finance current affairs by me, that is Davinder. Right? We ensure that we are covering each and everything again in a simplified way. और आपको ये freely available है. PDF भी हमने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑन अ डेली बेसिस वी अपलोडेड, राइट। इसके साथ साथ वी ऑल्सो कवर रिपोर्ट्स, स्पीचेस एंड अदर रेलिवेंट न्यूज़ेस एज वेल, राइट। अगर मैं प्रकाश सर की बात करूं, ही ऑल्सो कवर्स गवर्नमेंट स्कीम्स। उन्होंने नई सीरीज स्टार्ट करी है वेर इन ही इज कवरिंग ईच एंड एवरी गवर्नमेंट स्कीम्स इन डिटेल, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. And for the RBI circulars and notification, I am going to start with a new series wherein I am going to cover all the circulars and all the notification of the entire month. That will going to take place on every Friday. Right? तो वो भी हम start करेंगे. So you do not have to go here and there for the RBI circulars and notification. You are going to get all these things in one place. ठीक है? तो you can follow our channel, that is regulatory bodies Testbook, and you can follow all these things. तो आपको सभी करंट अफेयर्स एक ही जगह पे मिल जाएंगे, राइट। Whenever I talk about teachers and their respective current affairs के sessions, I would say that you must follow a teacher who makes sense to you, right? There are many other aspirants who say that हमें यही टीचर पसंद है या फिर हम इन्हीं का ही फॉलो करते हैं. It is not about teacher, it's about you. You have to see that video again and again on a daily basis, right? So if you find it comfortable, if that videos make sense to you, you are going to follow that teacher. You are not going to listen any other aspirant that what they are saying and whom they are following. It only up to you. आगे देखते हैं. That is your English. For English, we have two books. First is for vocabulary, that is Word Power Made Easy by Norman Lewis. Now, this is a book that tells you that how to write and they increase your vocabulary level. Okay, so you are going to cover that from here, and then we have descriptive English. This book tells you how to write and what to write. So this is going to be helpful in your practicing the questions for the English descriptive as well, and for your objective based questions as well in your phase 1, right? अब बात करते हैं हम क्वांट की. फॉर द क्वांट वी हैव 3 बुक्स. फर्स्ट इज कैट लेवल बुक है बाय अरिहांत. सो अगेन ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर है. दिस बुक इज गुड फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. ये बुक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए अच्छी है. इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. इसमें आपको फिर से फिगर आउट करना पड़ेगा. इसमें काफी डिटेल्ड में सब कुछ दिया हुआ है. सो अगेन यू नीड टू फिल्टर आउट थिंग्स दैट व्हाट इज देयर ऑन इन योर सिलेबस एंड व्हाट इज नॉट. ठीक है, तो इसमें काफी कुछ दिया हुआ है. फिल्टर दैट थिंग आउट. Then we have Bank PO. This book is for your practice. इसमें आपको हर लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. That is from easy to moderate to difficult. तो आप अपने जिस तरह से आप रेंज में हैं, आप मॉडरेट से डिफिकल्ट में जाना चाहते हैं, इजी टू मॉडरेट ढूंढना चाहते हैं, तो वो सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस जगह पे मिल जाएंगे. क्विकर मैथ्स. दिस इज फॉर योर ट्रिक्स. दैट इज मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स बाय BSc. ये इनके पब्लिशर है. ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स बताते हैं which is going to increase your speed in quant, तो ये बुक उसके लिए बहुत अच्छी है.
राइट? सो यू कैन रेफर दीज 3 बुक्स फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. अब हम बात करते हैं रीजनिंग की. For the reasoning, we have 2 books, Analytical Reasoning and Logical Reasoning, again by Arihan, की CAT level की book है. Again, you can follow this for conceptual clarity. Conceptual clarity के लिए you can follow this book, और practice के लिए you can follow this बैंक पीओ. मैं बैंक पीओ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें हर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. सो वंस यू हैव अ गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यू कैन डू द प्रैक्टिस हेयर साइड बाय साइड. तो इसलिए मैंने आपको ये 2 बुक रेफर करी है फॉर द रीजनिंग, राइट? अगेन लास्टली मैं आपको यही कहूंगी दैट ये सब मटेरियल्स पढ़ने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम फर्स्ट. सेकंड, यू नीड अ गुड टाइम टेबल जिसे आप डिलीजेंटली फॉलो करें. सो क्रिएट अ प्लान फॉर योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, दैट इज वेरी कंफर्टेबल एज पर योर शेड्यूल. ठीक है? तो उसे हम डिलीजेंटली फॉलो करेंगे, और उसे फॉलो करेंगे यानी कि उसे पढ़ेंगे. आप बैठेंगे effectively, you are using that particular or following that particular timetable, because RBI Grade B examination is not about hard work, it's about strategic preparation. If you are strategic enough about your preparation, you can easily crack this exam. Then we have practice. Practice तो करनी पड़ेगी. Practice and revision are the key of this examination. This is not a game of 15 days, 1 month or 2 months. This is going to take your next 3 to 4 months. So give your time to this, right? Apart from this, if you are looking for our Telegram group, this is my Telegram group, right? You can follow this for your finance, current affairs, PDFs, and many more things. That is, if you need any kind of guidance, you can follow this particular page, right? And thank you everyone. I hope this session is fruitful for you. Best of luck.